गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ कनक रस्तोगी। आई एम योर साइंस टीचर। जो आपका चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा रह गया था उसे हम कंप्लीट करते हैं आज। देखिए, एनिमल एंड प्लांट्स वो आर बोथ लिविंग थिंग्स, है ना। बट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेन डिफरेंस क्या होता है? एनिमल्स तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं, देखिए प्लांट्स तो नहीं जाते वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए अपना फिर भी ये कैसे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, कैसे इनके सीड्स इधर उधर चले जाते हैं, हम यही सीखेंगे आज। ओके, बेबी प्लांट आप देख रहे हो, सीडलिंग है ये बेबी प्लांट। इफ प्लांट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन हाउ डज द बेबी प्लांट रीच सो फॉर अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट ट्री? This happens because the seeds spread out to different places and allow plants to grow in new locations. The process by which seeds spread to new locations is called seed dispersal. Seed dispersal in many types. Seeds are dispersed by birds and wind. Needs for seed dispersal. Why do the plants need to disperse their seeds to different places? क्यों जाते हैं ये different places में? Seed to different places to find out the answer. Let us imagine a situation where there is no seed dispersal. Situation without seed dispersal. Such a situation, all the seeds will fall on the ground under the parents' plant and will start growing near each other. Because of crowding, the new seedlings will start competing with other sunlight, water, nucleus and space. Eventually, only a few of them may survive. To avoid this competition between the developing seedlings, plants have evolved a variety of ways to disperse their seeds. When dispersed to new locations, seeds have better chances of survival. In some plants, seeds are self-dispersed by spatial adaptations. But in most cases, seeds are dispersed by various natural agents. For instance, wind, water and animals. Wind and water and animals के थ्रू होता है dispersal. Okay. Seed dispersal by exclusion. Exclusion के थ्रू क्या होता है? Plants such as peas sproiting cucumber. Some plants have pods which explode or burst open when ripe and dry. This mode of dispersal of seeds is called explosion. Is for examples हैं इनके dispersal of pea seeds by explosion, bitter gourd and balsam. These causes seeds to be thrown away rather than falling below the mother plant. Examples of such plant: okra, bitter gourd, peas, beans and balsam. Seed dispersal by wind. Some seeds are carried to a new place by the wind. These seeds are very light, like the seeds of the orchid, are almost as fine as dust. Many seeds like that dandelion have hairy growths which act as parachutes. Parachutes देखेंगे अब आप इनमें, देखिए आप ये हेयर देख रहे हैं. And carry the seeds far away in the wind. Structure such as ये देखिए mid are. These adaptations can make the seeds land each with its own hairy parachute and carry the seeds far away in the wind. ये हेलीकॉप्टर के थ्रू भी हो रहे हैं, देखो हेलीकॉप्टर जैसे लग रहे हैं ना आपको. सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. मैनी टाइप्स के एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है. देखो, सम प्लांट्स हैव जूसी फ्रूट्स दैट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स लाइक टू ईट. वी थ्रो अवे द सीड्स विच आर नॉट ईटेबल. सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स with the fruits. In that case,
Only the juicy, fleshy part of the fruits is digested inside these animals' bodies. The stones and pips are excreted unharmed and produce new plants. ये बहुत सारे एनिमल्स देख रहे हो ना आप. Birds also help to disperse the seeds through their droppings. Some fruits like that of the burdock plant and jatura have seeds with hook-like structures. These seeds catch on to the fur of animals and are carried away with the animal. When the seeds get the right conditions, they germinate into new plants. अब देखो आप इन्हीं एनिमल्स को देख रहे हो ना आप सब कैसे ये लोग. अब देखो ये इसको बफेलो को देख लो. Seeds stick to animal hair and get dispersed. Seed dispersal by water. The method works for seeds which can float in water. The seeds and fruits of some plants that grow in water or near it are dispersed by water. The coconut has a thick coat of fiber which enables it to float. It is carried to far off places by water. The lotus fruit has a spongy part because of which it can float in water. देखो आप यहाँ पे देखो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको कोकोनट की. थिक होता है इसका पार्ट. कैसा होता है? थिक होता है. वंस दे फाइंड सुटेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सीड डिस्पर्सल देखो किस किस टाइप से. सेल्फ डिस्पर्सन और डिस्पर्सन यूजिंग एजेंट्स के थ्रू, बाय विंड, बाय वाटर एंड बाय एनिमल्स.